औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG514 के असाइनमेंट 1 का सलूशन। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस असाइनमेंट में जो हमें क्वेश्चन दिए गया है उसमें बेसिकली हमने बात करनी है AWL एकेडमिक वर्ड लिस्ट के बारे में। अब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। At the advanced level, learner who intend to study English at university needs to focus on academic vocabulary of English. This vocabulary can be found in academic word list. What is the academic word list and why is it important for learner who intend to study English at the university level? Explain in details with suitable examples. तो इसके आंसर को हम थोड़ा एलोबरेट करके लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास अनलॉकिंग द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्सिटी इंग्लिश। The power of the academic word list. For aspiring university student of English in Pakistan, the path to academic success demands more than just fluent conversation. It requires venturing into the realm of academic vocabulary, the language of scholarly discourse and critical thinking. This is where the academic word list AWL emerge as a crucial roadmap guiding you through the complex terrain of university level English. यहाँ पे बताया गया है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हमसे क्या डिमांड की जाती है और AWL उस समन में एज अ रोड मैप किस तरह से रोल प्ले करती है। व्हाट इज़ द एकेडमिक वर्ड लिस्ट? अब बेसिकली AWL है क्या, हम उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। इसको एक ऑथर ने इस तरह से डिस्क्राइब किया है। कंपाइल्ड बाय लिंग्विस्ट एवरिल Cox said the AWL is a curated selection of 570 words families commonly found in academic text across diverse disciplines. These words go beyond everyday English. They represent a conceptual building block of academic thoughts. Mastering them unlocks the ability to understand intricate argument, nuanced interpretations, and critical analysis woven into university level materials. Why it is important for पाकिस्तानी स्टूडेंट? अब ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए AWL किस तरह से इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम emphasize English proficiency, but the university demands a nuanced understanding beyond basic communication. The AWL equips you with the tools to. अब AWL के यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस बताए गए हैं। Comprehend complex text. Academic text in Pakistan and internationally are brimming with specialized vocabulary. Knowing the meaning and navigate intricate theoretical frameworks. Knowing the AL empowers you to decipher research paper across science, humanities, and social sciences, allowing you to grasp subtle shifts in meaning and navigate intricate theoretical frameworks. Imagine confidently dissecting a political science article on regional security thanks to you understanding of words like propaganda, deterrence and escalation. मतलब इस तरह के वर्ड्स को समझने के लिए, उनका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, कम्प्लेक्स जो टेक्स्ट होता है उसको कम्प्रीहेंड करने के लिए ज़रूरी है। आर्टिकल योर आइडियाज़ विथ प्रिसीजन. Beyond comprehension, the AWL empowers you to express your own thoughts with clarity and sophistication. Engage in meaningful seminars, write impactful research papers, and participate in critical discussion using precise terminology. No more struggling for synonyms. Terms like hypothesize, contribute, and conceptualize became your intellectual arsenal, enabling you to confidently defend your research on climate change in environmental science class. सबसे पहले हेडिंग में हमने ये पढ़ा है कि जो टेक्स्ट है, कम्प्लेक्स टेक्स्ट है, उसको आप कंप्रीहेंड कर सकते हैं। अब दूसरी हेडिंग में ये बता रहा है कि आप अपनी जो राय का इजहार है, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए AWL का नॉलेज अगर आपके पास होगा तो आप बेटर वे में वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक, किसी चीज़ के बारे में आपको रिसर्च लिखने के लिए कहा जाए या डिबेट वगैरह हो तो उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. Fluency in academic vocabulary fosters a sense of belonging and empowers you to actively participate in the university environment. Ask insightfulness questions in lectures, contribute to spirited debates, and present your research findings with assurance. Imagine confidently presenting your historical research on the Indus Valley civilization, utilization terms like archaeological evidence, cultural diffusion and socio-economic structures. ये कुछ टर्म्स बताई गई हैं, इनका नॉलेज आपको हो जाएगा। और अगर आप AWL आपके पास नॉलेज है तो
आप डिबेट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेक्चरार से क्लास के दौरान। और आप जो है किसी भी जब टॉपिक पे बात हो रही हो तो जो उसमें मुश्किल वर्ड यूज़ हो रहे होते हैं उनका आपको पहले नॉलेज होता है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स इन एक्शन। विटनेस द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ AWL थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ओरिजिनल सेंटेंस है द बुक वॉज इंटरेस्टिंग। AWL influence infused sentence the historical novel vividly depicts the dynamic social and political landscape of pre-colonial Egypt, promoting a stimulating discourse on the role of women and ancient civilization. Original question है what's the main idea? AWL infused question, could you please further elaborate on the author's central thesis and its implications for understanding the development of early agricultural societies in the Indus Valley? तो इस तरह से AWL का जो नॉलेज है वो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होता है। रेलेवेंस टू पाकिस्तानी लर्नर। In Pakistan, students often face challenges transitioning from English instruction in schools to the demands of university level discourse. The AWL bridge this gap by providing a targeted set of vocabulary crucial for success in diverse academic field. Additionally, the AWL caters to the Pakistani context by including words relevant by regional studies. मतलब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए AWL है उसमें रीजनल स्टडीज से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होते हैं। डिसिप्लिन ऑफर परसू बाय पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। कंक्वायर द चैलेंजेस। Learning the AWL may seem daunting initially, but it's an enriching journey. Utilize online resources, dedicate time to exposure to academic text, and actively practice incorporating AWL words into your everyday usage. Soon, the world of university English will unfold before you, empowering you to contribute meaningfully to scholarly discussion and excel in your academic pursuits. In summary, the academic word list is a vital tool for aspiring university students. Studying English as equips them with the linguistic tools necessary for effective communication, comprehension, and success in the academic realm. AWL is not just a list of words, it's your key to unlocking intellectual freedom and success in the English speaking academic world. So, embrace the challenge. Equip yourself with the AWL and confidently embark on your journey to becoming a master of university English in Pakistan and beyond. तो ये जी हमारे पास 10 मार्क्स की असाइनमेंट है। आई होप सो अगर आप ये लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं असाइनमेंट में।